So we are on the last chapter of chemistry in everyday life or everyday science chemistry. And in this last chapter, basically it is a summary of all the chapters that we have studied so far. Okay. And थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर से ये टेकअप करता है, इस वजह से चलिए शुरू करते हैं. अब इसमें रट्टा मारने वाले फैक्ट्स हैं सीधे सीधे इस चैप्टर के अंदर. सो ड्रग्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ, सो दे आर केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मासेस, दैट इज 100 to 500 units, that interact with molecular targets and produce biological response. जैसे आप पैरासिटामोल लेते हैं, इट्स अ ड्रग. हर ड्रग के अंदर एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, उसको हम एपीआई बोलते हैं इन शॉर्ट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. अब जनरल स्टडीज के एंगल से इस पे बहुत ज्यादा चर्चा हुई है काफी देर से, क्योंकि इंडिया एक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, उसमें हम जेनरिक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के लिए ज्यादा डिजर्विंग हैं. क्यों? क्योंकि हम ब्रांड रहित मेडिसिन बनाते हैं. जैसे क्रोसिन इज अ ब्रांडेड पैरासिटामोल, यस, बट वी क्रिएट सिंपली पैरासिटामोल, दैट्स इट. और ये जेनरिक फार्मेसी हमारी जो है ये साउथ अफ्रीका और बहुत सारे लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर हम एक्सपोर्ट करते हैं. लेकिन इसको बनाने के लिए जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट चाहिए होता है, ये हम करीब करीब 80% इंपोर्ट करते हैं. इस 80% में से 60% सिर्फ चाइना से इंपोर्ट होता है. आत्मनिर्भर भारत अभियान के अधीन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एपीआई मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी प्रोडक्ट लिंकेज इंसेंटिव स्कीम दे रही है. इस वजह से ये ज्यादा न्यूज में है. ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स. नाउ when the biological response is therapeutic and useful, these are called medicines and are used in diagnosis, prevention and treatment of disease. Or agar ulta ho, when the biological response is hallucination, when the biological response is death, poison, तो ये मेडिसिन की बजाय फिर पॉइजन्स, टॉक्सिन्स, इस तरह से फिर इनको काम करना शुरू करेंगे, और हेलुसिनोजेंस फिर ऐसे बोलेंगे. ठीक है. नाउ use of chemicals for therapeutic effect is called chemotherapy. Now, if taken in doses higher than those recommended, most of the drugs used as medicines are potential poisons. For example, in homeopathy, you take arsenic. Arsenic, we know, all of you know that it is a poison, you know? But arsenic in 30 parts per million, ppm, is a medicine. Itni kam potency. Maximum, that is what something that you take in homeopathy is 31 m. तो 30 फिर 200 फिर 1 m, ये तीन पोटेंसीज आमतौर पे आती है. आमतौर पे हम 1 m तक स्टिक करते हैं. 1 m मीन्स इट विल बी 1 million पार्ट्स पर मिलियन, सो इट इज द इंटायर पोर्शन जिसको हम बोलते हैं कि इक्विवेलेंट है. इससे ज्यादा मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब नहीं करते. अब ये भी बहुत रेगुलेटेड डोजेज में लेते हैं, ऐसे नहीं कि रोज ही लेते रहो. होम्योपैथी की कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं होती कि आप सारी उम्र खाते रहोगे. इसमें आपने 1, 2 और 3, बस, इससे ज्यादा हम कभी भी डोजेज ही नहीं लेते. चाहे ये 3 दिन के गैप पे हो जाए, चाहे एक ही दिन में 3 ले लें, वो अलग अलग आपके कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, बस, दैट्स इट. तो होम्योपैथी डॉक्टर्स अगर आपने पहचानने हो कि आपसे पैसे लेने के चक्कर में तो नहीं है, तो वो आपको बार बार बुलाएगा. ठीक है, बोला रोज दवाई लेनी, तो फिर वो आपको प्लासिबो दे रहा है. हैव यू हर्ड ऑफ दिस प्लासिबो इफेक्ट? Yes, sir. That is, there is no medicine. It is simply a powder or a liquid. Yeah, maybe it has some taste, but it has no medicine in it. That's called placebo. Okay. Now, barium sulfate is insoluble and can be used as an X-ray contrast medium. Barium sulfate or sulfite, on the other hand, is water soluble and poisonous. अब क्या है, एक तो सल्फेट है, एक सल्फाइट है. माइनर से डिफरेंस की वजह से ही बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है इन सॉल्ट्स के या केमिकल्स के काम करने के तरीके के ऊपर. ठीक है, तो ये क्योंकि न्यूज में रहते हैं तो इस वजह से हमें चाहिए होते हैं. एक्सरे तो आप कराने जाते हैं कभी ना कभी, तो आमतौर पे एक्सरे कॉन्ट्रास्ट मीडियम के अंदर बेरियम सल्फेट यूज होता है. ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स. हाउ डू यू क्लासिफाई? First is on the basis of pharmacological effect. What effect do they produce in your body? That's the pharmacological effect.
For example, analgesics have a pain killing effect. Antiseptics kill or arrest the growth of microorganism. Antihistamines आपका वॉमिटिंग रिस्पॉन्स कम करती है. ऐसी एंटीपायरेटिक, फायर मतलब फायर, हीट, तो आपका बुखार उतारने के लिए एंटीपायरेटिक यूज होती है. ठीक है, एंटीपायरेटिक, दैट्स फॉर फीवर रिलीफ. Okay. So on the basis of drug action, so it is based on the action that drugs produce on a particular biochemical process. For example, all antihistamines inhibit the action of the compound histamine, which causes inflammation. So they are the आमतौर पे जब पेट दर्द होता है तब antihistamines लेते हो आप, ठीक है, या vomitings आती हैं. Then on the basis of chemical structure, so it is based on the chemical structure of the drug. So they are classified by common structural features that have similar pharmacological activity. Structure मतलब cis trans, for example, इस तरह से cis और trans. आपने fatty acids भी देखे ना, वैसे ही cis और trans medicines भी होती. Then on the basis of molecular targets, so drugs usually interact with biomolecules such as carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acids, and these are called drug target molecules or drug targets. So drug processing, some common structural features may have same mechanism of action on the targets. The classification based on molecular targets is most useful classification for medicinal chemists. क्या आपको पर्टिकुलर तरह के प्रोटीन्स को टारगेट करना है, क्या करना है, उस हिसाब से हम दवाई बनाते हैं. तो लेट्स सी, फॉर एग्जांपल, proteins which perform the role of biological catalysts in the body are called enzymes. Enzymes का आमतौर पे हमारी जो डाइजेशन है या किसी भी रिएक्शन को फास्टन अप करने का, बायोलॉजिकल रिएक्शन को फास्टन अप करने का काम है. Now, those which are crucial to communication in the body are called receptors. तो अलग अलग तरह के हमारे बॉडी के functional aspects हैं. Now, carrier proteins carry polar molecules across the cell membrane. Nucleic acids have coded genetic information for the cell. Lipids and carbohydrates are structural parts of the cell membrane. So ये अलग अलग मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं और इनके बायोलॉजिकल ओरिजिन और फंक्शंस अलग अलग हैं. ये वाला एस्पेक्ट बेटर होगा कि बायोलॉजी के सेक्शन में हम रेफर करें. यहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा डिटेल देना पॉसिबल, फिजिबल, यूजफुल भी नहीं. ठीक है, ओके. नाउ व्हाट आर एंटासिड्स? सो हमने पढ़ा कि जब भी कभी एसिडिटी होती है तो एसिडिटी के बारे में भी लोगों की बड़ी गलत गलत धारणाएं. क्या एसिड आपके स्टमक के अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट है? एसिड रिफ्लक्स क्यों होता है? इन चीजों के बारे में कुछ बेसिक्स बताता हूँ. सी, एसिड रिफ्लक्स इज व्हेन योर स्टमक एसिड इज मूविंग अप इन द ओएसोफेगस. That's when you get the GERD. It's called gastroesophageal reflux disease, GERD. जो तेजाब आपके पेट में है, जिसको खाना पचाने के लिए यूजफुल है, होना चाहिए था उधर ही, HCl, वो आपके अप दी फूड पाइप आना शुरू हो जाए, ठीक है, जहां से खाना अंदर जा रहा है, ओएसोफेगस के ऊपर की तरफ आना शुरू हुआ है, तो आपको जलन महसूस होती है छाती के आसपास, तो वो GERD है. ठीक है. Now, why it happens? Smoking, eating large meals, or eating late at night, eating certain kind of foods such as fatty or fried foods. So they lead to this response. Now, what do people do? कई बार ये एसिडिक रिस्पॉन्स का कारण ये भी होता है कि स्टमक में एसिडिटी कम है, फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा. अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको डाइजेस्ट करने के लिए और ज्यादा एसिड स्टमक को रिलीज करना पड़ता है, और हम ऊपर से एंटी एसिड डाल देते हैं तो फिर वो और एसिड क्रिएट करता है. तो कई बार यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाती है. ओके, so in severe cases it can have ulcers developed in the stomach. So until 1970 only treatment for acidity was administration of antacids, that is sodium hydrogen carbonate or a mixture of aluminum and magnesium hydroxide, जो पिंक सा आपके पास डाइजीन करके आता है. However, excessive hydrogen carbonate can make the stomach alkaline and trigger production of even more acid. So your stomach should not be alkaline. Metal hydroxides are better alternatives because of being insoluble. Milk of magnesium देते हैं जैसे हम, and these do not increase the pH above neutrality.
These treatments control only symptoms and not the cause. Therefore, with the metal salts, the patients cannot be treated easily. In advanced stages, ulcers become life threatening and the affected part of the stomach needs to be removed. तो इतना इशू हो जाता है कई बार सिर्फ हमारी ईटिंग हैबिट्स की वजह से एंड नॉट नोइंग व्हाट टू ईट व्हेन ठीक है तो इस वजह से तो अगर आपके एसिडिटी रिस्पॉन्स ज्यादा इशू है तो दिस इज द वे फॉरवर्ड इट्स नॉट ऑलवेज गुड टू जस्ट कीप टेकिंग एंटासिड्स antihistamines. So, a major breakthrough in the treatment of hyperacidity came with the discovery according to which chemical histamine stimulates the secretion of pepsin and hydrochloric acid in the stomach. तो ये पर्टिकुलर केमिकल है जिससे दोनों secrete होते हैं अब होगा क्या देखिए the drug cimetidine that is tegamet this is the brand name this is the salt was designed to prevent the interaction of histamine with the receptors present in the stomach wall. This resulted in the release of lesser amount of acid, and the importance of the drug was so much that it remained the largest selling drug in the world until another drug that is called ranitidine or Zantac. आज के डेट में ये Zantac ज्यादा फेमस है ये यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा व्हाट इज Rantac व्हाट इज दिस Zantac दिस इज अ एंटासिड ठीक है Now, histamines is a potent vasodilator and it has various other functions. Now, it contracts the smooth muscles in the bronchi and gut and relaxes other muscles, such as those in the walls in the fine blood vessels. Histamines are also responsible for nasal congestion associated with common cold and allergic response to pollen. So, हमारी बॉडी के अंदर histamines की बहुत ज्यादा functionality है. Now, let's see the working of antihistamines a little bit. तो मेरा यहाँ पे अकाउंट लॉग्ड इन नहीं है सो आई हैव टू टेक यू टू गूगल फॉर दिस पर्पस जस्ट गिव मी वन मोमेंट अनामिका समझ आ रहा है अभी तक हिस्टामिन्स एंटीहिस्टामिन्स यस सर साइंस थी मेरे पास +2 तक बस बस ठीक है ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है हालांकि +2 में ये सब पढ़ते नहीं है बट कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ आ जाएगा समझ कोई बात कुछ तो कर ही लेंगे सर हाँ कुछ तो कर ही लेंगे टाइप्स ओके तो एंटीहिस्टामिन्स so I need to give you the audio as well. Your body has an emergency response system that springs into action the moment it detects a threat. Mast cells are some of your skin's first responders to such threats. They're like tiny alarms that are set off by things like allergies, bug bites, or stress. When triggered, mast cells release alarm signals, including molecules called histamines. Blood vessels and nearby nerve endings receive these histamine alarm signals. The blood vessels expand and release extra fluid. This causes swelling and redness. The signals also activate your nerves and cause itchiness. When this emergency response goes off too often, your skin can break out in hives. So, histamine is a very important thing for us. The human digestive system is very complex and has evolved over millions of years. ये बात नहीं ये अभी काम नहीं आएगा So histamine is not simply कि हाँ सिर्फ इतना ही काम कर रहा है कि एसिडिटी मेंटेनेंस के लिए है हिस्टामिन हमारे बेसिक नर्व रिस्पॉन्स का पार्ट एंड पार्सल है ठीक है ओके नाउ मूविंग ऑन synthetic drugs such as brompheniramine so that is Dimetapp or terfenadine that is Seldane act as antihistamines so
for many reasons you give antihistamines. You try to block the basic mechanism of the body. So it is a very natural mechanism of the body to release histamines when it detects some kind of a threat, so that your body can come into action. There can be inflammation, etc., etc. Then once there is inflammation, WBC response, white blood cells, everything can reach up there. But in general, we antihistamines को हम suppress करते हैं. Using antihistamines, we suppress them. Then neurologically active drugs. So these are called tranquilizers. So tranquilizers and analgesics are neurologically active. These affect the message transfer mechanism from nerve to the receptor. So they are a class of chemical compounds used to treat stress, mild or even severe mental diseases. They relieve anxiety, stress, irritability, excitement by inducing a sense of well-being. मेरे को लगता है ओह कोई टेंशन नहीं. They form an essential component of the sleeping pills, and there are various types of tranquilizers. They function by different mechanisms. For example, there is noradrenaline. So this is one of the neurotransmitters that plays a role in mood changes. Okay. Adrenaline, you all know, based upon that. Now, if the level of noradrenaline is low for some reason, then the signal sending activity becomes low and the person suffers from depression. Okay. Now, in such situations, antidepressant drugs are required. What do? They inhibit the enzymes which catalyze the degradation of noradrenaline or adrenaline. Okay. If the enzyme is inhibited, this important neurotransmitter is slowly metabolized and can activate its receptor for longer period of the time, thus counteracting the effects of depression. Now, similarly, iproniazid and phenelzine. So they are two such drugs, ये brand name के अंदर आती हैं. Then some tranquilizers, namely diazoxide and meprobamid. So these are relatively mild tranquilizers. तो animals के लिए होता है ना जैसे, तो ऐसे ही human beings के लिए है. ये क्या करते हैं? To relieve tension. Then Equanel is used in controlling depression as well as hypertension. Now, derivatives of barbituric acid constitute some important class of tranquilizers, and these derivatives are called barbiturates. Prelims में पूछा था. They are hypnotic in nature and they are sleep-inducing agents. Okay. So that is tranquilizers, antidepressants, whatnot. Simple walk and a glass of water can help a lot. Okay, analgesics. So they reduce or abolish pain. So analgesics are basically painkillers. So without causing impairment of consciousness, mental confusion, incoordination, or paralysis, जैसे कि tranquilizers कर सकते हैं. So they are classified as non-narcotic, that means non-addictive, and narcotic. So narcotics are banned in India. So non-narcotic or non-addictive analgesics, for example, aspirin, paracetamol. So आमतौर पे एस्पिरिन डिस्प्रिन लोग ऐसे टॉफी जैसे खा रहे हैं इंडिया में, लेकिन इनसे काफी प्रॉब्लम्स आती हैं. Aspirin inhibits the synthesis of chemical known as prostaglandin, which stimulates the inflammation in the tissue and causes pain. तो जब किसी को हेडेक होता है तो आमतौर पे एस्पिरिन ले लेते हैं. उससे हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये नहीं बनते, ठीक है, जो बनने चाहिए नेचुरली. These drugs are effective in relieving skeletal pain, such as those due to arthritis. And these drugs have many other effects, such as reducing fever. They are antipyretic and preventing platelet coagulation. कई बार किसी डिजीज की वजह से आपके प्लेटलेट कोएगुलेशन बढ़ जाता है, तो इसके लिए you take some anti-clotting agents. So for example, because of its anti-blood clotting action, aspirin finds use in prevention of heart attack also. So if you have some trouble, immediate relief, किसी को नहीं समझ आ रहा हार्ट अटैक हो रहा है, क्या करे? एक एस्पिरिन मुंह में ठूस दो उसके, तोड़ के, of course. ठीक है? Before the person can be taken to a hospital. So that's the easiest you can do at home. Then narcotic analgesics. So morphine is the one. जब बंदा बिल्कुल मरने वाला होता है तो उसको देने में कोई हर्ज नहीं है. So it is many of its homologs are used when administered in medicinal doses, relieve pain and produce sleep.
जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, जो बिल्कुल लास्ट स्टेज में है, जो बहुत पेन में है, उनको देते हैं. तो in poisonous doses, these produce stupor, coma, convulsions, and ultimately death. Morphine narcotics are sometimes referred to as opiates since they are obtained from opium poppy. They are basically opiates or opioids. Okay. These analgesics are chiefly used to relieve post-operative pain, cardiac pains, and pains of terminal cancer and in childbirth. तब देते हैं morphine. Very rare. Antimicrobials. So disease in human beings and animals may be caused by a variety of microorganisms such as bacteria, virus, fungi, and other pathogens. आमतौर पे फंगस जो है ना, ये बड़ा अजीब कैरेक्टर है. अभी लेटली एक रिसर्च चल रही है कि क्या क्लाइमेट चेंज के चलते फंगस अडेप्ट करेगा फॉर हायर टेम्परेचर्स. राइट नाउ एनी टेम्परेचर अबव 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, fungus don't live in this kind of environments. Now, inside the human body, what is the natural temperature that we have? Hello, 98.5. So this is the natural human body temperature. So inside, it doesn't find comfortable, so it does not live inside the human body. But the variation is only 8.5 degrees Fahrenheit. So under climate change, the fungi can adapt itself to live in higher temperature. If that happens, अभी तो हमारे आउटसाइड बॉडी में कभी फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए बहुत जबरदस्त मेडिसिन देनी पड़ती हैं. ठीक है, तो अब जाके वो थोड़ा कंट्रोल में आता है और आप अपनी लाइफ आराम से निकाल सकते हो. फिर भी वो रिकर करता रहता है अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए किसी को तो. ठीक है, अगर इनसाइड द बॉडी हो जाए तो फिर तो बहुत मुश्किल है इसको कंट्रोल करना या इसके स्प्रेड को रोक पाना. अभी रिसेंटली, हैव यू हर्ड ऑफ अमीबा? जब बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अमीबा पढ़ते हैं. अब पिछले हफ्ते अमीबा न्यूज में है. क्यों? यूएस के अंदर एक बंदा अमीबा से मर गया. ये US man dies of brain eating amoeba. So what happened is he just washed his face with water somewhere, and through nose amoeba entered, eat into the brain. So finished. Okay. So इसका अब नाम क्या है? Nogleria fowleri. So brain eating amoeba. So and it's a microscopic single cell living organism. This is the first kind of organisms that came up on this planet Earth. Okay, surviving till date. So with that, so this is something to be afraid of in coming future. Now, an antimicrobial tends to destroy or prevent the development or inhibit the pathogenic action of the microbes such as bacteria or fungi or virus or other parasites. So you got various kind of antimicrobials. So antibiotics, antiseptics, disinfectants are all antimicrobial drugs. Now, what is antibiotic? So when we say antibiotic, we are just referring to some pathogen. It refers to a substance produced wholly or partly by chemical synthesis, which is in low concentration, inhibits the growth or destroys microbes by intervening in their metabolic process. So how they consume food, how their metabolism goes, उसके अंदर interfere करता है. The real revolution in antibacterial therapy began with the discovery of Alexander Fleming in 1929 of antibacterial properties of penicillium fungus. So you got your antibacterial drugs created out of a fungus. Okay. Isolation and purification of the active compound to accumulate sufficient material for clinical trials took about 13 years. And after that, antibiotics have either CDAL, that is killing effect, or static, that is inhibitory effect on the microbes. Now, a few examples of two types of antibiotics, for example, penicillin, aminoglycosides, ofloxacin, तो ये तो आमतौर पे मिलती रहते हैं. एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, chloroamphenicol. So now last one, chloroamphenicol, isolated in 1947, is a broad spectrum antibiotic. आमतौर पे ये सारे ही कुछ कुछ इस तरह से ही हैं.
It is rapidly absorbed by the gastrointestinal tract and hence can be given orally in case of a typhoid, dysentery, acute fever, any kind of UTIs, meningitis, or pneumonia. So, vancomycin and ofloxacin are the two important broad spectrum antibiotics. तो इनका नाम याद रखना है, बस पूछेंगे इतना सा prelims के अंदर. Okay. Then देखिए, there is something called disidazirin. So disidazirin, this is supposed to be toxic towards certain strains of cancer cells also. Fine. Now antiseptics and disinfectants. जब चल रहा था COVID-19, अब तो अभी भी चल रहा है बट उतना ज्यादा टेंशन में नहीं है हम. तब ये डिसइंफेक्टेंट्स को लेके तो पूरी एक मार्केट नई एस्टैब्लिश हो गई. आजकल अब मैं देखता हूँ, I went on to Decathlon website yesterday, and on that now the masks are being sold as warm masks. ठीक है, ठंड से बचाने के लिए काम में. बने तो पड़े हैं बेचारों के पास, इतने बेचने कैसे? Yeah. So antiseptics and disinfectants are also chemicals which either kill or prevent the growth of microorganisms. So examples are furosin, soframycin, etc. And these are not ingested like antibiotics. Commonly used Dettol, for example, is a mixture of chloroxylenol and terpineol. And this terpineol is the reason why it turns white when you add it to water. Okay. Then bithionol is added to soaps to impart antiseptic properties. It also pattern. Iodine is a powerful antiseptic. 2 to 3% solution in alcohol water mixture is used as tincture of iodine. आमतौर पे वो brown सा solution आता है ना, कभी चोट लग जाती है तो iodine tincture लगा लेते हैं. And it is applied on wounds. Iodoform is also used as an antiseptic for wounds. Boric acid in dilute aqueous solution is an antiseptic for eyes. So generally, जो जितने भी antiseptics आते हैं irritation के लिए, primarily they use boric acid. Disinfectants are added to inanimate objects such as floors, drainage system, instruments, etc. रोज वो phenyl डाल के पोछा लगाते हैं लोग. Then phenyl is what? It's basically 0.2% solution of phenol. So that is phenyl. It is used as an antiseptic. Then chlorine in 0.2 to 0.4 ppm in aqueous solution and sulfur dioxide in very low concentration. So they are both disinfectants. So swimming pools में chlorine add करते हैं. Then anti-fertility drugs. So birth control pills, what are they? So they are basically synthetic estrogen and progesterone derivatives. So what they do is, both of these compounds are hormones, and it is known as progesterone. Known that progesterone suppresses the ovulation. Okay? So synthetic progesterone derivatives are more potent than progesterone that is naturally occurring. Then northindrone is an example of synthetic progesterone derivative most widely used as anti-fertility drugs. So that is for hormonal therapy also people use this these days. जैसे कई बार women suffer from various kind of hormonal issues. For that, like PCOS, PCOD, things like that. So in that also they use these drugs. Okay, because progesterone is one basic hormone which is very good for women. As long the secretion level of progesterone is good, women will remain very healthy. Their heart will be well protected. That's why you'll see there is very less chance of women suffering from heart attacks. Men suffering from cardiac arrest, on the other hand, will be very high because of this progesterone. This being there in women, and in men, it's lagging. Now, the estrogen derivative, which is used in the combination with progesterone derivative, is Novistrol. That's the brand name, and it is actually ethinyl estradiol. So it's like an alcohol. Diol means two alcoholic groups. अगर इसको पूरा break down करोगे तो it's an alkyne, okay, and an ester. So ethinyl estradiol. Okay. Now chemicals in foods. अब ये सारे ना नॉर्मल दिखने में लगता है कि बड़ी टेक्निकल बातें हों, लेकिन बर्थ कंट्रोल पिल्स को लेके गवर्नमेंट के पूरे पूरे कार्यक्रम चलते रहते हैं. तो उस टाइम पे यूपीएससी आपको ये डेफिनेटली पूछ सकता है कि भाई बताइए उसमें क्या होता है, what does it, how does it function, because this is the job. When you are an aspirant, you have to look a little bit under the hood कि है क्या birth control pills.
So you should know. Okay. Now chemicals in foods. So these are added to food for two, three basic reasons. Either you want to preserve food for a longer time, enhance their appeal, or add some nutritive value to it. For example, आजकल हम राइस के अंदर विटामिन इनरिचमेंट कर रहे हैं, विटामिन ए, etc. Yeah. So main categories of food additives are food colors, flavors, sweeteners, fats, fat emulsifiers, and stabilizing agents. Flour improvers like anti-scaling agents or bleaches, antioxidants, preservatives, nutritional supplements such as minerals, vitamins, or amino acids. तो ये सब तरह की चीजें फूड एडिटिव्स में आती हैं. Now, first kind of food additives are artificial sweetening agents. Natural sweetness, we got sucrose, that's the sugar. So add to the calorie intake, and therefore many people prefer artificial sweeteners. जीरो कैलोरी लिखा होता है उसके ऊपर, लेकिन वो एक्चुअली आपके लिए बड़ा खराब है, वो आपको भी पता चलेगा. तो ऑर्थो सल्फोबेंजीनमाइड ये ऐड करते हैं हम. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सैक्रीन. नाउ दिस इज द फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट. Aspartame is the most successful and widely used artificial sweetener. This is the commercial name, aspartame. Now, it is roughly 100 times as sweet as cane sugar. And this is limited to cold foods and soft drinks because it is unsuitable at cooking temperatures. Now, generally लोग क्या करते हैं, चाय में भी ऐड कर लेते हैं. अभी देखिए कोल्ड फूड में ठीक है, लेकिन चाय में ऐड किया तो गड़बड़ करेगा. Then allitame is a high potency sweetener. Although this is more stable than aspartame, the control of sweetness of food is difficult while using it. Then sucralose. So this is a trichloro derivative of sucrose. Its appearance and taste are like sugar, and it's stable at cooking temperatures, and it does not provide calories. So आजकल ये ज़्यादा न्यूज़ में sucralose. Okay, Prelims के लिए याद रखना. Aspartame पुराना हो गया. So these are artificial sweeteners. What they actually do is, there is a trouble with artificial sweeteners at the health point of view, and why you should not use it. छोड़ दो ना, क्या स्वीट होके फायदा है. अदरवाइज अगर खाना ही है तो फिर खा लो, मीठा नॉर्मल खा लो, चलेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि your tongue is giving the response that sugar is entering your body. Now, whenever sugar is entering your body, something like this, a brain response is received. There are things to digest sugar which will enter in your stomach. I'm talking in a very general way, not in a medical terms of it. है ना? तो शुगर है, अगर जा रहा है शुगर, तो बॉडी से रिस्पॉन्स क्या ना, अंदर पेट की तरफ, सारी बॉडी के अंदर, कि हाँ भाई शुगर जा रहा है, अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी जाओ. अब जब वो डाइजेस्ट करने जाएंगे तो शुगर होगा नहीं, कैलोरीज होंगी नहीं उसके अंदर, और डाइजेस्टिव सॉल्ट्स और आ गए आपके अंदर. HCl सिक्रीट हो गया ऑलरेडी काफी सारा स्टमक में उसको डाइजेस्ट करने के लिए. बाकी सब भी रिस्पॉन्स सिस्टम पूरा तैयार है शुगर को हैंडल करने के लिए, लेकिन शुगर नहीं. अब ऐसे में भूख ज्यादा लगेगी आपको. जब आपको भूख ज्यादा लगेगी, फिर आप जब कुछ खाएंगे वो और ज्यादा पचेगा, और ज्यादा बॉडी उसको स्टोर करके रखेगी, और भूख लगेगी खाने के लिए. सो दे विल मेक यू मोर हंग्री, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स. एंड you are not eating sugar, but in terms of calories, you will intake more calories. You will intend to intake more calories. This is what artificial sweetening agents do to a person. ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज करते हैं, दे टेंड टू ब्लोट. Why they tend to bloat is, whatever food they are ingesting after having this artificial sweeteners, the system is too much ready to ingest food. So whatever they are ingesting, it is preserved like anything, because system is in a kind of shock. Okay? So it's bad to put your system in the shock. Okay? ठीक है. बहुत सारी चीजें ना केमिकल इंडस्ट्री बनाती है ताकि आप थोड़े और बीमार हो. फिर अब जैसे I'll tell you one thing. Dehradun is a place known in Uttarakhand for lots of hospitals. All those hospitals are owned by a company called Monsanto. Have you heard of Monsanto? This Monsanto is a company which also sells Mahiko. इनकी इंडियन सब्सिडरी है, उसके थ्रू बीटी कॉटन इन्होंने पुश किया इंडिया में. उसके बाद अब ये ग्लाइफोसेट,
जो है एक फूड एडिटिव होता है, उसको भी इन्होंने इंडिया में पुश किया। जीएमओ क्रॉप्स इन्होंने इंडिया में पुश करने शुरू किए। अब इन सब के थ्रू जब बीमारियां पैदा होती हैं तो मॉन्सेंटो हॉस्पिटल्स भी यही कंट्रोल कर रहा है। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके अंदर भी इन्हीं की मार्केट मेजोरिटी है, ये पेटेंट्स लेके बैठे हैं। So this is how they create the complete circle. First they give you something with which you are unhealthy, then they treat your health. Okay. So this is the entire circle. Monsanto is just one company. Okay. Now food preservatives. So food preservatives prevent the spoilage of food due to microbial growth. In general, we use table salt, sugar, vegetable oil, and sodium benzoate as food preservatives. अचार आप बनाते हैं उसके अंदर तेल और नमक आमतौर पे यूज होता है, वो एक फूड प्रिजर्वेटिव करने की तरीका है। Sodium benzoate is used in limited quantities and is metabolized in the body, and salts of sorbic acid and propanoic acid are also used as preservatives. 6 महीने तक प्रिजर्व कर लेते हैं। आजकल हमारे पास तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया, हम आईआर रेडिएशन को भी यूज करते हैं। समटाइम्स व्हेन अ क्लोज्ड कंटेनर ऑफ फूड, उसके अंदर नाइट्रोजन भर दीजिए, चिप्स होते हैं जैसे, उसको आईआर के थ्रू एक बार निकाल दीजिए। उसके बाद क्या होगा, आईआर यूवी रेडिएशन से निकाल देंगे, तो ये जो माइक्रोब्स होंगे उस टाइम पे वो मर जाएंगे। और उसके बाद माइक्रोबियल एक्टिविटी शुरू होने के लिए अगर होना भी हुआ तो 6-8 महीने के बाद होगी फूड के अंदर। तो दिस इज द सिचुएशन। ओके, नाउ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया, तो ऊपर जो आप पढ़ के आए हो वही यहाँ पे रिपीटेड है, नॉट मच डिफरेंट। कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन, एवरीथिंग इज सेम। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, एनायनिक, केटानिक डिटर्जेंट्स, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, लेकिन what you have studied earlier, that is more than sufficient. Okay, so moving on. पढ़ लें, चलिए चल देखते हैं क्या है। पेपर में नहीं आएगा, just for now. So synthetic detergents are cleansing agents which have all the properties of soaps, but which actually do not contain any soap. These can be used in both soft and hard water, as they give foam in hard water also. By the way, you know what is the difference between soft and hard water? Hello? No, sir. Okay. See, hard water is the one which contains calcium and magnesium ions. So what happens is these ions form insoluble calcium and magnesium soaps, respectively, when sodium or potassium soaps are dissolved in hard water. तो hard water के अंदर ये जो ions है ना, calcium और magnesium ion, इस वजह से ये hard water है। और इसके साथ सोप वो जो बबल्स बनाना चाहिए या फोम बनाना चाहिए वो नहीं बनाता, इनफैक्ट वो स्कम बना देता, नीचे जाके सेटल हो जाता सोप। ठीक है, and there is a hindrance to good washing capability of the soap, and because the precipitates adheres onto the fiber of the cloth, वो चिपक जाएंगे in fact soap precipitates. Now hair washed with hard water look dull because of this sticky precipitate. बालों में भी चिपक जाएगा अगर hard water से बाल धो रहे हो तो। Now dye does not absorb evenly on the cloth washed with soap by using hard water because of this gummy mass or scum. So this is the problem with hard water. तो हार्ड वाटर के अंदर हम नॉर्मल सोप्स जो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड होते हैं वो नहीं यूज कर पाते। मिसल फॉर्मेशन और वो सब तो आपने पढ़ ही लिया था। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की कैपेबिलिटी है कि वो हार्ड वाटर के साथ भी फोमिंग कैपेबिलिटी रखते हैं। अब ये 3 तरह के आमतौर पे होते हैं, सो एनायनिक, कैटायनिक एंड नॉन आयनिक। तो इसका रिपीट ही है एनायनिक का। तो ठीक है, एनायनिक, एनायंस और कैटायंस आपने पढ़ रखा है। एनायंस कौन से होते हैं, जो एनोड की तरफ जाएंगे, कैटायंस जो कैथोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो एनायन डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन्स alcohols or hydrocarbons. In anionic detergent, the anionic part of the molecule is involved in cleansing action, so Na plus. Okay, now sodium ions of alkyl benzene sulfonates are an important class of anionic detergents. They are mostly used for household work and they are used in toothpastes generally. Okay, then cationic detergents, so they possess a long hydrocarbon chain and a positive charge on the nitrogen atom. So essentially इनकी property है nitrogen use करना, उधर sodium है इधर nitrogen, hence these are called cationic detergents. So cetyl trimethyl ammonium bromide is a popular cationic detergent
and is used in hair conditioners. कई बार आपके बाल बड़े soft लगते हैं, धोने के बाद hair conditioner लगा लेते हैं. Now, they have germicidal properties and are expensive, and therefore these are of limited use, generally hair conditioners. Non-ionic detergents. So they do not contain any ions in their construction. One such detergent is stearic acid, reacts with polyethyl glycol. So liquid dishwashing detergents are non-ionic type. बर्तन धोने के साबुन. Mechanisms of cleansing action of this type of detergent is same as that of soaps. These also remove grease and oil by micelle formation. Main problem that appears in the use of detergents is that if their hydrocarbon chain is highly branched, then bacteria cannot degenerate this easily. Slow degradation of detergents leads to their accumulation, and effluents containing such detergents reach rivers, ponds, etc., and that will lead to something called eutrophication. याद है? Environment and biodiversity के अंदर पढ़ा था. Eutrophication, excess nutrients. Yeah. So these days, branching of hydrocarbon chains is controlled and kept to the minimum. Unbranched chains can be biodegraded more easily, and hence pollution is prevented. So that's how we are using the non-ionic detergents these days. Okay. Now, periodic table is something that you have already covered, but you don't need to remember much about it. सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल बनता है वो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है. ये एटॉमिक मास के बेस पे बनाया गया था, लेकिन ये ज्यादा चला नहीं. इसके बाद फिर एक और पीरियोडिक टेबल आता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. दिस इज गिवन बाय हेनरी मोजले एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. बस इतना प्रीलिम्स में याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं याद. अभी पीरियोडिक टेबल के अंदर, so this is how it looks like. We've already worked it out. So this is hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. ऐसे याद रखना होता है. Group 1, Group 2, फिर then boron family, carbon family, nitrogen family, oxygen family, fluorine family, and inert gases. So this is the way to remember them. Don't remember them like this. Okay. And these are D block elements. This is first transition series बोलते हैं इसको, and second and third and then fourth. Okay. And these are lanthanides and actinides. ये वालों को याद रखने का ये वाला फैशन. You should remember them like this up till zinc. अगर याद रखने हो तो, वैसे तो यूपीएससी में याद रखने की जरूरत है नहीं. ठीक है. So elements present in any one group have the same number of valence electrons, means in the outermost shell. For example, hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. फ्रांशियम रेडियो एक्टिव है इसमें से, और ये सबके अंदर आउटरमोस्ट शेल के अंदर +1 एक इलेक्ट्रॉन है. तो इनका जो बिहेवियर एग्जीबिशन है वो +1 आता है. क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन 1 लूज करेंगे. बेरिलियम का, मैग्नीशियम, ये सब +2 क्योंकि इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बोरॉन के अंदर +3. कार्बन के अंदर टेट्रावैलेंसी है तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, हमने पढ़ लिया. नाइट्रोजन के अंदर बाहर के शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये -3 इनको लूज करने की कोशिश करेगा. ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, ये 0 क्योंकि इनके तो 8 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, तो दे डोंट रिएक्ट, दे आर इनर्ट गैसेस. सो हमने ऑलरेडी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो सब पढ़ लिया था. This is the same repetition. Metallic, non-metallic properties are also the repetition only. So you have covered this already. Okay. Then some miscellaneous topics. So combustion and flame के साथ लेकर. So what is ignition temperature to begin with? So the lowest temperature at which the substance catches fire is called as ignition temperature. आज हम chemistry खत्म कर देंगे. As agreed. Okay. Now we find that the gas burns rapidly, and such combustion is known as rapid combustion. अगर जल्दी जल्दी हो, जैसे कि हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल. हीलियम फ्लेमेबल नहीं होता, हाइड्रोजन फ्लेमेबल होता है. ऑक्सीजन को हम बोलते हैं इट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन. तो कभी भी कहीं कंबशन होनी है तो ऑक्सीजन कैरी करना बहुत जरूरी है. जैसे रॉकेट फ्यूल के अंदर भी ऑक्सीजन टैंक हम अलग से लेकर जाते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन. ठीक है. देन इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. So the substances which have a very low ignition temperature, they are called inflammable. They easily catch fire. For example, petrol, alcohol, LPG, etc. Then spontaneous combustion. Something that automatically catches fire at room temperature is called spontaneous combustion. For example, phosphorus. तो हड्डियां जो होती हैं
शमशान घाट के अंदर, वो कई बार जलनी शुरू हो जाती हैं अपने आप ही, ठंडी हड्डियां भी, तो उनके अंदर फास्फोरस होता है, इस वजह से जलते हैं। ठीक है, फास्फोरस भी अलग अलग तरह का, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस इज समथिंग दैट यू यूज ऑन योर मैच बॉक्स के ऊपर रेड फास्फोरस होता है, उसके साथ तुम उसको जला पाते हो मैच स्टिक को। देन द टाइप ऑफ combustion in which a material suddenly bursts into flames without application of any apparent cause is the spontaneous combustion. For example, coal mines में कई बार coal dust के अंदर हो जाती है, forest के अंदर हो जाती है, lightning strike के बाद या बहुत ज्यादा heat के बाद forest fires आ जाते हैं, so they are in spontaneous combustion category. So paper by itself catches fire easily where a piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not. पेपर को आप धूप में रखिए लेंस के नीचे, जल जाएगा, लेकिन wrapped around an aluminium pipe it does not, because the heat will continuously be taken away. Yeah, so aluminium pipe does not heat as quickly because the heat is conducted away. So paper जो है wrapped around aluminium pipe, उसका heat निकलता जाएगा aluminium पे. Also a free paper has more access to air or oxygen to catch fire. अगर aluminium के around है तो एक साइड ही air उसको अवेलेबल है, दूसरी साइड से हवा अवेलेबल नहीं. इनकम्प्लीट कंबशन, कभी भी किसी फ्यूल की इनकम्प्लीट कंबशन अगर होती है, स्पेशली हाइड्रोकार्बन या कार्बन फ्यूल की, तब उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जब कोई चिमनी या कुछ हम एक क्लोज्ड रूम के अंदर यूज करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है. ये कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टी है कि ये 300 गुना ज्यादा रिएक्टिव है विद हीमोग्लोबिन इन आवर ब्लड एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. So when oxygen reacts with hemoglobin, it creates oxyhemoglobin. This is something that is helpful in transfer of oxygen to each and every cell in our body. But carbon monoxide with hemoglobin forms something called as carboxyhemoglobin, and this forms at a rate 300 times more than oxyhemoglobin. तो ये पूरे cells को capture कर लेगा, उसके बाद the cells will be starved of oxygen and you will die out. And it is a tasteless, odorless gas, and you will not even know what happened. Sleep में ही drowsiness induce होगी, drowsiness में ही खत्म हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा. Suffocation भी फील नहीं होगी ज्यादा अगर सोते ही रह जाओगे कई बार. तो डिपेंड करता है कितना कार्बन मोनोऑक्साइड रूम में है. तो only solution is immediately going out or getting oxygen, and maybe you can be saved. Okay. So vaporization and flame. The substances which vaporize during burning give flames. For example, kerosene oil and molten wax give rise through the wick and are vaporized during burning and form flames. वो vapors जब ignite होते हैं हवा के अंदर तब हमें flame नजर आता है. Charcoal on the other hand does not vaporize and so does not produce any kind of flame. So within the flame, the hottest part is the topmost section. Okay. And outer zone of complete combustion is blue because there is oxygen sufficiently is there. The middle part is moderately hot and the lower part is least hot. So temperature varies towards the top of the flame, increase करता रहेगा. Middle is a zone of partial combustion. यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी नहीं है. ऊपर की तरफ ये जो लेयर है उसके अंदर ब्लू लेयर है, so that is having good amount of oxygen and that's complete combustion. Now wax candle, innermost zone of unburnt wax, so जहाँ पे वेपर्स हैं तो वो ब्लैक है, तो वो वहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे विक के ऊपर, तो इसीलिए विक जो है वो ब्लैक हो जाती है. ठीक है, दिस इज हाउ इट इज लाइक. Now there are 3 different zones of flame: dark, luminous and non-luminous. Non-luminous zone means the one at highest temperature, and in fact this part of the flame is hottest. Now matchstick, जो माचिस की तीली आप यूज करते हो कैसी होती है? So it is a mixture of antimony trisulfide, potassium chlorate and white phosphorus. So when struck against a rough surface, white phosphorus ignites due to heat of friction, and this starts the combustion of the match. Now, however, white phosphorus proved to be dangerous both for the workers involved in manufacturing matches and for the users. So these days, the head of safety match contains only
एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। अब दो ही चीजें आती हैं, और रेड फॉस्फोरस आता है वो डिब्बी के ऊपर, ठीक है। So the rubbing surface has powdered glass and little bit of red phosphorus, which is much less dangerous. White phosphorus सस्ता पड़ता है, लेकिन कार्सिनोजेनिक होता है, ठीक है, वेरी डेंजरस, और रूम टेम्परेचर पे भी बर्न कर जाता है कई बार। इस वजह से अब हम व्हाइट फॉस्फोरस यूज नहीं करते। So when the match is struck against the rubbing surface, some red phosphorus gets converted into white phosphorus because of heat, and this immediately reacts with potassium chloride in the mastic head to produce enough heat to ignite antimony trisulfide, which starts the combustion. Okay? So water versus carbon dioxide as fire extinguisher. आग जलाने पे पानी डालते आपने सबको देखा है, ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन को रिप्लेस कर सकता है। ऑक्सीजन इज बेसिकली दी सपोर्टर ऑफ कंबशन, जिसकी वजह से फ्लेम चल पाएगा फर्दर। तो उसकी जगह पे ऑक्सीजन निकाल के कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया जाए तो फ्लेम अपने आप खत्म हो जाता है। ओके, सो वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। लेट्स से एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑन फायर, हाउ कैन यू स्प्रे वाटर ऑन इट? So if electric equipment is on fire, water may conduct electricity and harm those trying to douse the fire. So what happens? So यस सर, मिट्टी डालते हैं उस पे या रेता, हाँ, मिट्टी तो डालते हैं। मिट्टी डालने की भी कोशिश यही है कि ऑक्सीजन ना हो उस एरिया में, ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म करने, ठीक है। यस सर। So for fires involving electric equipment, so carbon dioxide is the best extinguisher अगर available हो तो। Carbon dioxide being heavier than oxygen covers the fire like a blanket. Since the contact between fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled, and that helps cooling down the entire thing. इसके अलावा क्या कर सकते हो? ब्लैंकेट यू कैन रैप अराउंड द फायर, तो वो भी क्या करता है? ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देगा, जितनी ऑक्सीजन उस पर्टिकुलर एरिया में होगी वो बर्न आउट हो जाएगी। देन another way to get carbon dioxide to release a lot of dry powder chemicals like sodium bicarbonate or baking soda or potassium bicarbonate. So इनको पास में रख दो तो फ्लेम के, या इनको स्प्रे कर दो। आमतौर पे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनके थ्रू यही स्प्रे किया जाता है, एंड दैट हेल्प्स इन कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग रिलीज्ड इन द एरिया। वो एक ब्लैंकेट सा बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो फ्लेम जल्दी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इज कैलोरिफिक वैल्यू। Calorific value is basically the amount of heat energy which is produced on complete combustion of 1 kg of fuel, 1 kilogram of fuel, and is called calorific value. ये फ्यूल की बात हो रही है, ये फूड की बात नहीं हो रही है। उधर भी कैलोरीज वो अलग है, ठीक है। A calorific value of a fuel is expressed in units called kilojoule per kilogram. Okay. Let's see. Cow dung cake has a calorific value of 6,000 to 8,000. Wood 17,000 to 22,000. Coal very high, 25,000 to 33,000. Calorific value बढ़ती चली जा रही है, देखिए। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ऑलमोस्ट एक जैसी कैलोरिफिक वैल्यू है। मीथेन, सीएनजी एक जैसी है, एलपीजी ज्यादा है। Then biogas somewhere near coal only. Then hydrogen even lesser. Okay, so these are the amount of energy which is available out of these fuels. So hydrogen is more than LPG, CNG, methane, petrol, diesel, kerosene. यहाँ पे ना ऊपर इधर हाइड्रोजन के अंदर एक जीरो एक्स्ट्रा है, ठीक है। So it is 1,50,000 calorific value. So that's why we are using hydrogen as a one of the fuels, but the way we will be using them in FCV is not burning, but through ion exchange. फिर इसको burn नहीं कर रहे हम, चाहे इसकी calorific value जितनी भी है, because we don't want hydrogen to be burnt out. We just want it to be exchanged with oxygen and create water out of it. Yes. Now fossil fuels, you already know coal, coke, coal tar, coal gas, petroleum किस किस तरह का होता है. So let's have a look at them also. So how did it get into being? So about 300 million years ago, Earth and the dense forests in the low-lying wetland areas, due to natural processes like flooding, these forests got buried in the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted into coal.
as coal contains mainly carbon, slow process of conversion of dead vegetation into coal, that is called carbonization, happened. Since it was formed from the remains of vegetable or animals, this is called as fossil fuel. So coal is processed in industry to get some more products like coke, coal tar, or coal gas. Coke किसको बोलते हैं? So it is a tough, porous black substance, almost pure form of carbon, and it is used in the manufacture of steel or stainless steel. And as you have already seen, coking coal हम उसको बोलते हैं. Then coal tar सड़क में use होता है. So it is black, thick liquid, unpleasant smell, mixture of about 200 substances, and the product is obtained from coal tar are used for starting material for manufacturing various substances of everyday life in industry like synthetic dyes, explosives, perfumes, plastics, paints, photographic material, roofing material, many other things. So sab coal tar se aa rahe. Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are coming from coal tar. Bitumen is a petroleum product. This is used in place of coal tar for metaling of the roads. What you actually use is not coal tar, but bitumen. It's a derivative of coal tar. Coal gas. So this is obtained by processing of coal to get coke, and it is used as a fuel in many industries. Petroleum, you know how it is formed. Abhi, world's first oil well was drilled in Pennsylvania, USA, 1859. And there is no looking back. तब से हम fossil fuel use कर रहे हैं. 8 years later, 1867, oil was stuck in Makkum in Assam. In India, oil was found in Assam, Gujarat, Mumbai High, and in the river basins of Krishna and Godavari. Now, petroleum की fractional distillation से हमें अलग-अलग products मिलते हैं. Like, let's see. So सबसे refined जो lowest amount of carbon है, that is C1 to C4 gases, that is methane से लेके butane तक. Methane, ethane, propane and butane, इनको liquefied petroleum gas की तरह हम यूज करते हैं. फिर C5 से लेके C9 तक, okay, that is right up to no name, pentane से लेके, that is used for chemicals. इसको नाफ्ता बोलते हैं in short, ठीक है. फिर जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आता है, दैट इज कॉल्ड गैसोलीन. दिस हैज अगेन C5 टू C10. जो गैसियस फॉर्म में आया वो तो हमने नाफ्ता केमिकल यूज कर लिया, और जो लिक्विड फॉर्म में आया उसको गैसोलीन बोलते हैं. दैट इज फ्रॉम C5 टू C10. ओके, नाउ दिस इज इन पेट्रोल्स, और जनरली पेट्रोल व्हीकल्स के लिए यूज करते हैं. C10 to C16 is called paraffin oil or kerosene. This is used in jet fuels, or paraffin for lightning and heating, kerosene oil. Then C14 to C20, this is diesel, and for diesel engines we are using. Then C20 to C50, more carbon atoms, more thickness, and this is used for lubrication, grease, waxes, your shoe polish. Then C20 to C70, this is fuel oil, which is used for ships, factories, or for central heating. Then more than C70 is a residue, which is used as bitumen for road and roofing. रूफिंग के अंदर उसको एक वाटर प्रूफिंग मटेरियल के लिए यूज करते हैं, और रोड के लिए भी यही मेन काम होता है कि वाटर प्रूफिंग हो जाए. सो दैट्स हाउ ऑन हीटिंग क्रूड ऑयल थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वेरियस थिंग्स आर फॉर्म्ड. ये आपके लिए प्रीलिम्स में रिक्वायर्ड हो सकती है इंफॉर्मेशन. ओके, तो इसी को ऑयल रिफाइनरीज हमारे यही काम करते हैं एसेंशियली. सो मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस व्हिच आर कमिंग आउट ऑफ this refinery process, they are called petrochemicals, and they are used in manufacturing detergents, fibers, polythene, even fertilizers. Hydrogen gas obtained from natural gas is used for the production of urea fertilizers. Okay, and due to its great commercial importance, it's called black gold petroleum reserves. Now, natural gas, what is it? So this is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes and is stored under high pressure, so therefore called as compressed natural gas. It's a cleaner fuel for vehicles, CNG. Okay, so in India, there are vast reserves of natural gas. For example, Tripura, Rajasthan, Maharashtra, and KG Basin. So we have natural gas supplies, and that's why we are trying to use more and more vehicles based on natural gas now.
Then important alloys and their content. कई बार पूछा जा सकता है कि ये alloy किससे बना, prelims में direct question आ सकता है. So alloys are basically homogeneous mixtures and they cannot be separated easily. For example, brass is an alloy of zinc and copper. Then steel, तो स्टील भी हमारे पास अलग अलग है. एक कार्बन स्टील है, इट इज एन एलॉय ऑफ कार्बन, कॉपर, मैंगनीज, फॉस्फोरस, सिलिकॉन एंड सल्फर. ऑब्वियसली आयरन तो है ही, ठीक है. देन एलॉय स्टील, दिस हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ एडिटिव मेटल्स एंड स्टेनलेस स्टील हैज एटलीस्ट 10% क्रोमियम. ये प्रीलिम्स में पूछा गया था पहले. तो कार्बन स्टील और एलॉय स्टील अभी पूछना बाकी है. देन देयर आर कॉपर अलॉयज. So copper is widely used for electricity and thermal conduction. Generally, bronze is one of the copper alloys with tin. Brass is with zinc. Okay. So these are the two. जो आपको याद रखना है, bronze and brass. Gold and platinum alloys. So yellow gold contains cobalt, copper, silver, or zinc. White gold contains nickel and palladium. Platinum is typically mixed with iridium, ruthenium and cobalt. इरिडियम पॉलिश करते हैं आमतौर पे, जो व्हाइट से कलर की आपको नजर आती है, गोल्ड ज्वेलरी के साथ साथ भी कर देते हैं कई बार. देन देयर आर एल्यूमिनियम अलॉयज. So pure aluminum is soft, resists corrosion, conducts electricity well. So it can be used in things like kitchen foil, but applications requiring a stronger material, then it has to be alloyed with something. Okay. So aluminum alloys फिर हम create करते हैं. जैसे एयरक्राफ्ट की बॉडी क्रिएट करनी है तो फिर हमें स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम चाहिए. और जो भी चीजें एल्यूमिनियम से बनती हैं उनको बोलते हैं व्हाइट मेटल गुड्स. फिल्म्स में एक बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाइट मेटल गुड्स कौन सी है इनमें से. तो एयरक्राफ्ट्स, नेवी बोट्स, इवन कार्स, so they are made out of aluminum. ओके. अब ये जो नीचे टेबल है कि कौन सा अलॉय कहां से बना, इसको रट्टा मारना है. नो वे अराउंड दिस. पूछा जा सकता है आपसे स्टील में क्या है, स्टेनलेस स्टील में क्या है. परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एलिमेंट्स याद रखने हैं. ठीक है. कॉपर, जिंक, निकल, tin, and so on. Okay. Synthetic materials. Natural material is something that is occurring naturally. Synthetic is something that you create in lab. So synthetics generally they have or synthetic fiber is something which has a polymeric structure. तो या तो पॉलीमर होंगे या मोनोमर होंगे. दो तरह की चीजें हमारे पास हो सकती है. मोनोमर मतलब सिंगल मॉलिक्यूल, पॉलीमर मतलब आपस में जुड़े हुए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स. जैसे पॉलीथीन है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप्स. Now, polymers is basically a substance with the molecular structure formed from many identical small molecules which are bonded together. जैसे पॉलीथीन की मैंने अभी बात की, तो इथीन आपने पढ़ा है, CH डबल बॉन्ड CH, एक इधर निकल रहा है एक इधर, ये पॉलीथीन इस तरह से बन जाता है. ठीक है. अदरवाइज C2H4 होना चाहिए था ना, तो दो हाइड्रोजन एटम्स निकल जाएंगे दोनों तरफ से और ये पॉलीमराइजेशन के लिए यूज हो जाएगा. दिस इज पॉलीथीन यूनिट. ये आपस में इस तरह से बहुत सारे यूनिट जुड़ेंगे तो एक पॉलीथीन मॉलिक्यूल बन जाएगा. ठीक है. ऐसी पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा. ओके. मोनोमर, सो दिस इज अ मॉलिक्यूल दैट कैन बी बॉन्डेड टू अदर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ पॉलीमर. सो दैट इज, जैसे इसको अगर सिंगल यूनिट को बोलेंगे तो दिस इज मोनोमर. So polymers occur in nature also. For example, cotton is a polymer called cellulose. Cellulose is made up of large number of glucose units. तो एक glucose is monomer, उसमें से जो जुड़ जुड़ के बने, that is called cellulose. उसका example है cotton. All synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw material from petroleum origin, that's called petrochemical. ये जो nylon etc बन रहे हैं यहीं से आ रहे हैं. For example, रेयन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, ट्राइलिन और टेरिलिन, एक्रिलिक, तो ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ड्राइव हो रहे. नाउ रेयन फॉर एग्जांपल, so scientists were successful in obtaining fiber having properties similar to that of silk. Such fiber were obtained by chemical treatment of wood pulp, and this fiber was called rayon or artificial silk. Although rayon is obtained from a natural source that is wood pulp, yet it is a man-made fiber because we are treating wood in some way. Okay. Cheaper than silk, and it is mixed with cotton to make bed sheets and mixed with wool to make carpets. Okay. Nylon. Now, what is nylon? So it was made without using any natural raw material at all, plant or animal. It is made out of coal, water, and air. So it is first fully synthetic fiber created by mankind.
is strong, elastic and light. It is actually stronger than a steel wire अगर ढंग से बनाया हो तो. And polyester, तो यहाँ पे ester linkages हैं, poly plus ester. Now esters are very sweet smelling or fruity smelling compounds. Perfumes में भी esters use होते हैं. Now fabric made from this fiber does not get wrinkled easily. It means crisp and is easy to wash, and so it is quite suitable for making dress material. So PET, polyethylene terephthalate. So this is very familiar form of polyester. Polyethylene terephthalate, PET. PET bottles भी आते हैं आजकल, ठीक है? They are used for making bottles, utensils, films, wires, anything. Okay. Terylene. So this is a popular polyester. It can be drawn into very fine fibers and woven like any other yarn. Acrylic, ये विंटर क्लोथिंग के लिए, ब्लैंकेट्स के लिए एक्रिलिक शॉल्स, वूल जैसा होता है दिखने में, तो एक्रिलिक वूल भी बोलते हैं कई बार. तो इट इज अ सिंथेटिक फाइबर. देन मिक्सिंग ऑफ फाइबर्स, आजकल अलग अलग तरह के फाइबर्स मिक्स कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट, ऐसे बोल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल पॉलीकॉट इज पॉलिएस्टर प्लस कॉटन, पॉलीवूल इज पॉलिएस्टर प्लस वूल, ठीक है. टेरिकॉट इज टेरिलिन प्लस कॉटन, जो आपने ऊपर देखा. ओके. Then plastic. So this is a polymer like synthetic fiber. So generally जो प्लास्टिक है वो सल्फर से बनाया जा सकता है, S8. ओके. तो या फिर प्लास्टिक PET पॉलीमर से भी बनाया जाता है, पॉलीइथिलीन टरफथैलेट. पेट बॉटल्स आपने सुना है. देन पॉलीइथिलीन, सो पॉलीइथीन प्लास्टिक आप यूज करते हो. इट इज वन काइंड ऑफ अ प्लास्टिक. So commonly used as polythene bags. Thermoplastics versus thermosetting plastics. Plastics which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics. Polyethylene and polyvinyl chloride are some of the examples of thermoplastics. जैसे आपके पॉलिथीन बैग है या पीवीसी पाइप है, थोड़ा हीट करो, बेंड कर सकते हो, तोड़ सकते हो, जला सकते हो, ठीक है. They are used for manufacturing toys, combs, and various other containers. On the other hand, there are some plastics which, once molded once, cannot be softened on heating. These are called thermosetting plastics. For example, bakelite and melamine. Melamine की हम कटलरी भी यूज करते हैं कई बार घर में, प्लेट्स एक्सेट्रा, तो वो वैसे के ऐसे रहते हैं, हीट से ज्यादा जल्दी खराब नहीं होते. So bakelite is a poor conductor of heat and electricity. This is used for electric switches, handles of various utensils. Then melamine, so this resists fire and can tolerate heat better than other plastics, and is used for making floor tiles, kitchenware, and fabrics which resist fire. Then fireproof plastics. We are basically melamine plastics only because they are poor conductors. तो जो वायरिंग होता है उसके अंदर यूज कर सकते हैं, माइक्रोवेव ovens के अंदर यूज कर सकते हैं फॉर हीटिंग. एंड टेफ्लॉन, so this is a special plastic on which oil and water do not stick. So it's called non-stick cookware. But recently we have known that this is cancerous, and now we are trying to avoid Teflon-based coating of any kind, non-stick cookwares. Wrought iron is the best way to go forward. So uske andar it's naturally non-stick. जो डोसा बनाने के लिए तवा यूज होता है ना, वो रॉट आयरन का होता है आमतौर पर. कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर, कोई स्टिक नहीं करता कुछ भी, ठीक है. देन सोल्यूशन किसको बोलते हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो सब इकट्ठे कर दिए. सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस नहीं है, मतलब सारा एक जैसा दिखेगा. The particles of a solution are smaller than 1 nanometer in diameter, so they cannot be seen by a naked eye. Then, because of very small size, they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution. The solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. दो चीजें होती हैं solution के अंदर, एक होता है solute और एक होता है solvent. जिसके अंदर मिक्स किया जाए वो है solvent, जिसको मिक्स किया जाए वो है solute, and this creates a solution. जैसे if I am putting salt in water, it will make a solution. एक चम्मच नमक मैंने पानी में डाल दिया, वो उसके अंदर मिक्स हो जाएगा पूरा, मुझे दिखेगा भी नहीं to an extent, ठीक है. So the solute particles cannot be separated from the mixture through a process of filtration. फिर मैं वो नमकीन पानी फिल्टर के थ्रू निकालूंगा तो नमकीन ही आएगा नीचे,
खास फर्क नहीं पड़ने वाला है. When no more solute can be dissolved in solution at a given temperature, it is called saturated solution. अगर पानी ठंडा है और उसमें मैं नमक डाल रहा हूँ, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ नमक तो उसमें डिजोल्व हो जाएगा, उसके बाद मुझे हीट करना पड़ेगा, फिर जाके वो डिजोल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा. जब वो ठंडा होगा दोबारा फिर क्रिस्टलाइज कर सकता है. तो एक लेवल तक आप एक टेम्परेचर पे किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर सकते हो, बियॉन्ड दैट नहीं. इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन. The amount of solute present in a saturated solution at this temperature is called solubility. तो ये prelims के लिए दोनों definitions चाहिए. Then there is called non-homogeneous system. It's called a suspension. For example, milk is a suspension. It's not a solution. Yeah, various fats, they are suspended in a solvent. So a suspension is a heterogeneous mixture, and in which solute particles do not dissolve but remain suspended to the bulk of the medium. Particles of the suspension are visible to the naked eye. So SPM, for example, in the air pollution. Okay. So suspension is a heterogeneous mixture, and the particles of suspension can scatter a beam of light. The solute particles settle down when a suspension is left undisturbed. Therefore, it is unstable. This is soil in water, for example. आप डाल दीजिए मिट्टी पानी के अंदर, थोड़ी देर के लिए ऐसे पार्टिकल्स अलग अलग नजर आएंगे, बाद में सेटल डाउन हो जाएंगे. They can be separated from the mixture through filtration. Next is the colloidal solution. So the particles of a colloid are uniformly spread throughout the solution. Due to relatively smaller size of particles as compared to that of a suspension, the mixture appears to be homogeneous. Appears to be, actual में नहीं है. But actually, colloidal solution is a heterogeneous mixture. For example, milk is a colloidal solution. Now, because of small size of colloidal particles, we cannot see them with the naked eye. They scatter a beam of light, and the scattering is called Tyndall effect. ये जो आपको आसमान के भी रंग नजर आते हैं ना, अलग अलग चेंज होते हुए, ऑरेंज, ब्लू, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एयर है, which in fact air is a colloidal solution itself. So see, this is Tyndall effect. Fine. So this is also observed when a fine beam of light enters a room through small hole, and scattering of light by smoke in the air or small particles in the air. So that all is happening at all times. This is called Tyndall effect. Okay. Colloidal solution के अंदर एक और चीज होती है emulsifying agents. आप पढ़ोगे, आगे जाके देखते हैं हम. So a colloid is a heterogeneous mixture, as we know. Although it is quite stable, undisturbed छोड़ोगे तो भी ये settle down नहीं करेगा. और ना settle down करने का एक कारण है, there is a process called as emulsification. Emulsification. जैसे हम बोलते हैं ना, एक पर्टिकुलर वर्ड होता है इमल्शंस, पेंट्स एंड इमल्शंस, सुना है? कई बार इमल्सिफिकेशन एजेंट्स डाले जाते हैं कुछ शेक्स के अंदर, जैसे मिल्क शेक या कुछ आप खरीद के आते हो, कि उसमें कोलॉइडल सोल्यूशन में ही रहे, वो डिसॉल्व रहे. कोलॉइडल सोल्यूशन में कोलॉइडल पार्टिकल्स को डिसॉल्व रखने के लिए इमल्शंस यूज होते हैं, जो बाइंड करके रखते हैं उसको सोल्यूशन के अंदर, अदरवाइज वो सेटल डाउन कर जाएगा. ठीक है. Now, but a special technique known as centrifugation can be used to separate the colloidal particles. So under pressure, mechanical pressure, outward acting, ये हो सकता है. जैसे centrifuge में दूध रख दो तो. The components of colloidal solution are in the dispersed phase and the dispersion medium. Dispersed phase क्या है? जिसके अंदर dissolve किया गया. Dispersion medium क्या है? जिसमें कर रहे हैं. So see, solute-like component or the dispersed particles in the colloidal form, the dispersed phase. And the component in which the dispersed phase is suspended is called dispersing medium. जिसके अंदर डाला गया वो है dispersing medium, जिसको डाला गया वो है dispersed phase. Okay. So colloids are classified to according to their state, that is solid, liquid or gas, and of the dispersing medium or dispersed phase. अब ये जो colloid बनेंगे अलग अलग, ये prelims में पूछे गए, जैसे कि fog, cloud or mist is a colloidal solution of liquid in gas. ऐसे बोलने का मतलब क्या है? डिस्पर्सिंग मीडियम जिसके अंदर डिसॉल्व किया गया, और क्या डिसॉल्व किया गया वो है लिक्विड. कौन सा लिक्विड है? वाटर, है ना? ये क्लियर हुआ? एंड व्हाट इट इज एक्चुअली कॉल्ड इज एरोसोल. ऐसे ही
solid in gas is also called as an aerosol. तो solid in gas की एग्जांपल क्या है? स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. तो इन एयर के अंदर सॉल्वेंट, एरोसोल ऐसे याद रख सकते हो. वो किसका सोल्यूशन है? एयर के अंदर या तो लिक्विड का होगा या गैस का होगा. देन गैस एंड लिक्विड, फॉर एग्जांपल फोम, लाइक शेविंग क्रीम. लिक्विड इन लिक्विड, so this is called emulsion. यहाँ पे जो डिसॉल्विंग मीडियम है वो भी लिक्विड और जो डिसॉल्व किया जा रहा है वो भी लिक्विड. सो दिस इज मिल्क और फेस क्रीम. सॉलिड इन लिक्विड, सो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम. तो जैसे आपकी इंडाइजेशन के लिए एंटासिड दवा यूज करते हो, और मड. देन कीचड़ जिसको बोलते हैं. गैस इन सॉलिड, सो फोम, रबर स्पॉन्ज, फ्यूमिस, फ्यूमिस स्टोन, दैट इज गैस इन सॉलिड. Liquid in solid, so this is gel, for example, jelly, cheese, or butter. Solid in solid, so colored gemstones or milky glass, so that is a solid in solid colloidal solution. ये वाली जो एग्जांपल्स हैं ये स्टेट सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी में कहीं भी पूछे जा सकते हैं. एग्जांपल भी पूछ सकते हैं, टाइप भी पूछ सकते हैं, किस तरह से बनाया गया ये भी पूछ सकते हैं. तो ये टेबल समझ के अच्छे से ध्यान से याद रखना. ठीक है. So that's that for chemistry in your everyday science. Next subject for us to start in this category will be physics. Okay, ये बहुत देर से आप लोगों ने physics नहीं पढ़ा होगा. फिर उसके बाद biology के ऊपर आएंगे once chemistry and physics are finished. So that's something we'll start with tomorrow itself. Okay, thank you.